waiting for him. So we'll just begin, and we've prepared a list of questions that usually students have been asking us from our experience. So we'll try to cover that, and there'll be live question answers that audiences from all the platforms that will be curated here, and we'll be taking that live. What's how so many questions we would be able to take? We'll try and cover it. So let's begin. So the first question, I think that most of the students ask us, and I think we've also faced that, are what are the common mistakes to avoid during JEE main preparation? So what are some of the mistakes that so you have seen with your experience that students make and that take them behind in their preparation? Okay, there will be a lot of mistakes actually, not some. That's exactly the reason examination is so very tough, and it's a ruthless examination, which I always say, where the paper setters have to eliminate 9,90,000 people from the 10 lakh aspirants. So more than a selection examination, it's a rejection examination, and reasons for rejections will be many. But I'll keep this pertinent to current stage, especially November, early November, where we are in. So usually this is the stage where notifications are expected. The dates are a little uncertain and we are close to getting the dates. So this is when students will also be completing their syllabus or on the verge of completing their syllabus. And this is the time where they have to focus more on revision. So at this time, most of the students wail away their time thinking as to what to do. Shall I focus on current topics or shall I start the revision? If I have to start the revision, shall I start from 11th or shall I start from 12th? फिजिक्स करना है, मैथ्स करना है, केमिस्ट्री करना है, ये सोचते सोचते टाइम निकल जाता है. So the biggest mistake is thought paralysis is what I call overthinking. Don't think. Do whatever you do, but don't waste any time in terms of strategizing or planning. Quickly start with something. Yes, is it current topic which is important or revision which is important? Weight is always on revision because you might have already covered wherever you are learning, whatever stage you are in, you would have already covered 80% of the syllabus. You will have the final 5 hours of your one-day match. So what you have covered is 80% chunk, and 80% is more than sufficient for you to get a wonderful seat scoring and wonderful branch scoring rank in JEE Main. So if you focus on this 80% also, you will still be able to manage wonderful results. So this 80% chunk is very useful, and that you can crack only by focusing on revision. So majority of your time should go on revision, not on the current topics. ठीक है, current topics में करना है, लेकिन उससे ज़्यादा important है revision. So simply have a plan ready for revision and immediate effect. With effect from now, you have to have your plan for revision, and you should start focusing on your revision. During the meantime, I will also come up with what all chapters to start with and some rough idea, but literally makes no difference. You can start wherever and jump. Don't waste time in terms of over planning or over thinking. Start getting into the doing mode. That is the first mistake. And second mistake is again in terms of thinking about the strategy, whether to do physics more or chemistry more or maths more and all that stuff. Okay, so I'll come to that in detail. This is again something where, at least at this stage, the mistake should not be in terms of overdoing one single subject and completely ignoring the other. So if I don't like maths, don't ignore maths. Because examination day, you will have a lot of pressure if one of the two papers, physics or chemistry, comes tough. Right. You will have to get your share of marks from all the three subjects. So don't ignore any subject. Some people start ignoring chemistry or a part of chemistry. Don't do that mistake. Have balanced preparation in all the three subjects. That will ease you, especially when papers are tough. So when papers are tough, what happens is you will have easy questions in all the three subjects. And if you carefully pick these easy questions from all the three subjects, still you will be able to get a decent rank, wonderful rank. So if you have left one subject, that will paralyze you. So that mistake don't do. Balancedly prepare in all the three subjects. And second thing is, again, in terms of confusion, that I have to focus on advanced or main or school exams. See, your thought should be clear. There is no one single right answer here.
If I have to draw a rough ballpark, कुछ अंदाजा से बताना है तो if your scores are more than 180, mock test scores are more than 180, that means your chances of getting through JEE Main are high, relatively higher. So this time you can prepare balancedly for JEE Advanced as well as for Main. Okay. So the score in 118, any of the mock tests that the student might be giving anywhere. Yeah, not any of the average of the last 4-5 mock tests, averaging of last 4-5 mock tests. If your score is about 180 plus, then you can happily prepare for advanced as well as for main together. If it is somewhere between 140 to 180, converge all your energies onto JEE Main. Once your JEE Main first attempt is over, then let us take a call on advanced. Till that time, scoring high in JEE Main is very important. If your scores are below, and ignore school exams to whatever extent you can, because 140 to 180 when you are there, you're just with some additional effort, you will be there in an NIT or 80 or some decent college. So school examination scores will not be very important. When you're 140 less than 140 side, then school scores will also be important to you. So you have to balance between school scores as well as JEE. That is how you have to plan. Okay, so don't think of this, make out this mistake like you are in one zone and focusing on the other zone. So clearly see which zone you are in, 180 plus or 140 to 180 or less than 140, and accordingly strategies. That will be the simplest thing to do. And there will be a lot of other mistakes will come across through the journey. Okay. So I mean, being realistic here is very important, right, sir? Because realistic at this stage is utmost important, because good or bad, we have to admit what we are. If you are good, we have to be thinking of making it better. If you are bad, let not the things become worse. We have to move into the good zone. So realistic diagnosis. See, most important thing in medicine is diagnosis. If the diagnosis is not right, whatever medication you take, it will fail. Simple thing here also. Unless and until you understand yourself correctly, whatever you will be doing will not yield. So understand your preparation, understand your strengths, weaknesses, and accordingly strategize the preparation. So at this time, you have to be very honest to yourself. You need to have your MRI right. That means which chapters you are comfortable, which chapters you need a revision, which chapters you don't know at all. So this picture of yours should be there on paper, and accordingly you have to prepare. Right. Because I think ये हमने भी देखा है, with us as well. Students who've not been, listening, or sometimes they feel that नहीं, we'll be able to manage JEE Advanced, but they're still not there. And we've guided them that you have to focus more on JEE Mains. Have actually hampered their JEE Mains rank as well. So it is very important. So for Sivya, you have used a wonderful word here, feel. So feelings के लिए कोई जगह नहीं है. Especially we are dealing with professional courses. Be it medicine or engineering, these are all professional courses. यहाँ पे feelings के लिए कोई जगह नहीं है. There is no role for perceptions. Only role is there for reality, and reality is something which can only be, you can conclude from the data. So your mock test marks are indicative of what you are, where you are, and accordingly take a call. ये नहीं सोचना है कि मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ, वो सोचता हूँ, ये कोई मायना नहीं रखता. रियलिटी में कितना स्कोर से वही मायना रखता है. एंड कोई वो दिक्कत नहीं. इफ यू आर ऑन द बॉटम साइड आल्सो, still there is some time, and strategizing properly, you will still be able to make it. Yes. So first admit it, and then you will make it. Yes, last leg maybe people who have strategized well have actually come up well. They have been able to improve their scores like many folds. So you have to listen carefully and strategize. That is the key here. Being realistic. Yes. Thank you, sir. So we'll move on to the next question that we have here. A very important one again. So how do I reduce my silly mistakes in JEE Mains? I always lose 30 to 40 marks while giving mock tests. I think 95% of the students, they do this and they come up with this question. So sir, what is your take on this? Actually, Sivya, silly mistakes is in green, it should be in red. And this silly mistake कोई होता नहीं है. There are only mistakes, and then there is another category of mistakes, suicidal mistakes. Suicidal mistakes, right? No mistake is silly. If you don't know a question and you made a miss of it, not to worry. But knowing if you are making a mistake, that is suicide.
Yeah. Because one question can make your computer science mechanical, it can make your Trichy, maybe Agartala or something other than. So you cannot be that casual with this kind of an examination. And these top-notch institutions want diligent engineers. They don't want casual engineers. अभी देखा ही है गुजरात में क्या हुआ, negligence of few people costed many lives. Most unfortunate. So if you are making silly mistakes, don't take engineering or medicine as your career. Definitely not. So you can become a teacher like me, but not like any other thing. So silly mistakes के लिए कोई chance नहीं है, and don't condone those mistakes. एक ही इलाज है इसका, एक जूते मार लेना है जोर से कान पे. That is the best medicine for making silly mistakes. You should never ever condone such mistakes at all in your preparation. ठीक है. Now I will come to the reality part of it. Mistake happen for two reasons. One, for casualness. Casualness we should never exhibit in the examination, and giving lot more examinations and understanding yourself where you are prone to make mistakes, which mindset of yours will make you prone to mistakes, is something which is very essential. ठीक है, कोई disturbance हो गया, कोई suddenly I get panicky because 2-3 questions नहीं हो रहा है. In that stage I am making mistakes. So understand your psychology, where exactly you are making these mistakes, and whenever you are coming through that phase of in the examination, you have to have a remedy. जैसे पानी पी लेना है या थोड़ा बहुत इधर उधर relax chill marna, and then I have to get back to the examination. You have to quickly come out of that phase of psychological phase. So that is one thing you have to do. And second type of mistakes are actually which students call them silly mistakes, but they are conceptual mistakes. They are not silly mistakes. अच्छा ये सोच रहा था लेकिन ये डाल दिया, ऐसे कोई डालता नहीं. To be honest, ये सोच के भी नहीं डालता. So somewhere deep inside, you are not confident about your own preparation. So revision, thorough revision, distinct memory है, subconscious memory में है, then you will be prone to such mistakes. So revision, that's exactly the reason I am saying it is very important. Revision will make you whatever you have prepared for last few months, last few years come on to the surface. When you are thorough, you will not make a mistake for whatever reason. There will not be any scope. So number of times you revise, that will become essential, especially in chemistry, formulas and mathematics, concepts and also misconceptions in physics. You have to go through each one of them rigorously. And you also have to make an error analysis sheet. If there is any mistake which you are committing time and again, you have to note it down on a piece of paper, store all of them, and before the examinations, not one day before the examination, but 2-3 days before the examination, you have to go through all this checklist की ये मैं गलती कर सकता हूँ, ये is I will not I will do things right. That is what you need to tell yourself and move on. Okay, so don't call any mistake silly mistake. Mistakes are grave and they are very serious mistakes, and for this professional kind of preparation, that is not allowed. Right. This is, not at all. So, allowed in the preparation for JEE mains. That's what sir is saying again. Exactly. And conceptual mistakes hai to learn the concept, especially when you are preparing for theoretically sound chapters like differential calculus and permutations and in physics, your second part of rotation. I don't see any mistakes which you can commit except for calculation mistakes in inertia and other things, but second part of rotation and in some parts of electricity. So these are the areas where you may commit conceptual errors. So being conceptually sound and going through doing lot of questions and analyzing the mistakes will make you overcome that kind of mistakes. That is where the mock tests, the role of mock tests and analyzing your tests, we have been, I think, in every webinar, this is again and again come up that, giving mock tests is important, but analyzing them is all the more important. You can't just give a more than giving the mock test. So if you are giving a 3-hour test, spend another 3 hours in terms of analyzing and understanding where, why, and where the mistake went. Yes. And if something is happening repeatedly, work on it. Yes, exactly. And putting that analysis into use for, all the upcoming mock tests. So that is the key here, right? Right. Again.
So we'll move to the next question here now. So, can anyone crack the JEE Main by self studying in 6 months? Okay. So, what do you think, sir? Now, I mean, if somebody starts just, I mean, by self studying in 6 months, do you think he or she can crack JEE Main's exam, or that a guided approach, a mentor is important here? First of all, there are no 6 months. So even thinking of April as the attempt, but you have to be serious about your JEE first attempt. First attempt will boost your confidence a lot, and also there will be relatively less competition in first attempt. So first attempt is something which you have to take it seriously. Uh, Plan it for some mid-February as the time some newspapers say. So that is where you have to plan for. So that will leave you hardly with around 75 days of preparation. And even if you consider your April May attempt, but don't take much time because there will be disturbance in terms of boards and other things, and maybe other examinations. So we don't have the luxury of 6 months. Right. And self-studying is always like whenever we talk of a top athlete, we also take the name of his coach. So role of coach here becomes very essential. So a coach is a personalized coach is something which is very essential. So personalized coach, you know how to get a personalized coach for yourself. जिस टीचर के पास हम बार बार डाउट्स के लिए जाते हैं वो अपने आप पर्सनल कोच विदाउट एनी एडिशनल पे बन जाता है. So keep in touch with the teacher, regularly keep asking him doubts, and after some point in time you can also ask him strategy. Day one पे अगर जाके पूछेंगे कि सर क्या करना है मुझे, तो whatever even a best of the teacher what he can advise you is like a मेडिकल शॉप में जो दवाई देते हैं ना वैसे ही होगा. इट विल नॉट बी लाइक व्हाट ए डॉक्टर एडवाइजेस यू. डॉक्टर तभी एडवाइस देगा व्हेन डायग्नोसिस इज कंप्लीटली रेडी. सो थोड़े दिन डाउट्स पूछते जाओगे कोई टीचर से तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि तुम्हारा स्ट्रांग एरियाज क्या है, तुम्हारा वीक एरियाज क्या है. एंड देन व्हेन ही टेल्स यू समथिंग that will be important. So you have to have a personalized coach. So self studying is very, very, very unadvisable. So if you have not left with any other option when you are doing self study, at least have a test series which is guiding you. And that time test series जैसे एकलव्य जैसा prepare करना है तो एक द्रोण का मूर्ति तो भी रहना चाहिए. So one test series should be there at least, and that test series you have to take it as your guru. टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं वही सत्य है, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं. सो टेकिंग दैट एज योर सजेशन you have to work on your preparation, but that should always be your plan B, not plan A. And whatever time is, now don't waste time thinking ये sufficient है या नहीं. अब करना है तो करना है. And ग्राफ तुम्हारा ऐसे जा रहा है, suddenly you will have a leap before the examination. Graphs are always exponential. If you see that there is a positive slide in the graph, suddenly without even your notice, it will jump like exponential. So 30-40 mark में अगर ये 2-3 महीने में बढ़ा है, suddenly the final examination you will see a leap of 50 to 60 marks. So don't stop worrying about time. Make proper utilization of available time. जितना भी time है हमारे पास, without wasting a single minute, हर एक मिनट आराम से यूटिलाइज करो. ओके. Yes, very important. So because अभी भी some students they feel at this time है ना कि अब तो बोट निकल गई, we've lost it already, अब तो time नहीं है, अब कुछ नहीं होगा. So for them is also. यहाँ पे मजे की बात बताता हूँ मैं. मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसे ही सोच के दे गिव अप, तो उससे कंपटीशन भी कम हो जाता है. जो हौसला बढ़ा के रखते हैं ना यहाँ पे वही लोग जीत जाते हैं. So majority of the students give up saying that अभी नहीं होगा, टाइम नहीं बचा हुआ है. And जो भी अब हिम्मत से last 2.5 months 3 months वो हिम्मत जुटा के रखते हैं, they are the winners. So that is most important. You have to keep up your confidence. You have to work with even more rigor. अगर तुम्हें लगता है कि अब तक टाइम नहीं हुआ, वेस्ट हो गया या प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुआ, then you have to develop your preparation. जितना भी maximum prepare कर सकते हो करो.
100% सक्सेस तुम्हारा ही होगा. And we've seen a lot of upsets as well. Students who were not doing that much good or well, have certainly come up. And students who were doing, good have gone down because they've given up at this stage. So it is very important. Exactly. So it is always a game of psychology. Psychology. आजकल वर्ल्ड कप देख रहे हैं. So on your given day, पता नहीं जिम्बाब्वे हारेगा या इंडिया हारेगा, nobody can say. We bet good teams and lost to inferior teams. So nothing can be said. On your given day, you can always be a hero, and to be that, उसके लिए एक ही चीज करना है, keep up your positive attitude. ये जो ग्राफ बताया मैंने ना, थोड़ा स्लोली पॉजिटिव स्लोप से जा रहा है तो अचानक से ऊपर उठेगा. नेगेटिव स्लोप कहीं पे भी आ गया तो ये डिप अचानक. तो डोंट अलाउ दैट नेगेटिव स्लोप. Keep up the positive thing for next till the examination day. Yes. At least till the examination day. Yes, very important, very important. Let's move on to the next question now, sir. So, okay. So this is, I think, just I wanted to tell you कि बच्चों को जब टाइम कम नजर आ रहा है, ठीक है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज मैं बताता हूँ कैसे करना है. You need not prepare for the entire syllabus. This is very important because at this stage, students get confused कि अब 11th के जो हमने chapters छोड़ दिए थे वो करें या वो करें कि ना करें या 12th. This is just not like a board examination. Board examinations में क्या है? You have to score maximum. Yes. 90%, 80% ही अच्छे माने जाते हैं. उससे कम कोई पूछे नहीं जाते. But in JEE, even with 60% also, you will still be able to get wonderful seat in NIT. Yes. Even with 60% also, you will be able to get wonderful results in JEE. So it's a low scoring examination. Low scoring examination में क्या होता है? Indirectly choice दिया हुआ है. So now you have to invest your time. जब कम time है, invest your time wisely on few things. So if you cut your entire syllabus into 4 quadrants, chapters को classify करो. कुछ ऐसे chapters होते हैं जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं जिनका वेटेज पे हाई होते हैं, लेकिन ये पढ़ने के लिए भी काफी टाइम लगता है. एंड कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो वेटेज हाई होता है और कम समय में कंप्लीट किया जा सकता है. एंड ऐसे भी चैप्टर्स होते हैं जो कम वेटेज में होते हैं और टाइम काफी ले लेते हैं. तो ये तो छूना ही नहीं है हमें. फोर्थ क्वाड्रेंट वाला तो छूना ही नहीं है. लेस वेटेज एंड हाई टेकिंग, ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, इनको छूना ही नहीं है. एंड लेस वेटेज लेस टाइम टेकिंग, ये लास्ट में देखते हैं. सो आई टेक यू एन एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स कि ये चैप्टर्स कैसे होते हैं, हाई वेटेज वाले कौन से हैं, हाई टाइम टेकिंग वाले कौन से हैं. नाउ इफ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. मैथमेटिक्स का अगर एग्जांपल लेते हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स लेस टाइम में, तो अगर कुछ ही चैप्टर्स कंप्लीट करना है तो there will be roughly about 25 chapters in mathematics. Now if you look at this 10 chapters, these 10 chapters cover 50% of your examination period. 25 में से 10 chapters कर लो, you will be able to score 50%. And ये भी कितना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला चैप्टर्स नहीं है. स्टैटिस्टिक्स मुश्किल इसमें 2-3 घंटे में खत्म कर पाओगे. एरिया अंडर द कर्व आराम से हो जाएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत दिन से करते आ रहे हो. बाइनोमियल थ्योरम ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, आजकल टर्म्स में ही पूछा जा रहा है. मल्टीनोमियल थ्योरम के टर्म्स एंड बाइनोमियल थ्योरम के टर्म्स पे क्वेश्चंस हो जाएगा. स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल्स 11 से करते आ रहे हो, यू विल बी एबल टू डू इट वेल. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पीवाईक्यूज कर लो. वेक्टर्स में भी रिपीटेडली सेम तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सेम तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. 3D में भी सेम कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. फिर लुक एट पीवाईक्यूज, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन in most of these chapters. So preparing them is not at all difficult. Happily you will be able to cover this 50% of the syllabus in no time. ठीक है, ये चैप्टर्स लिख लो, इस पे पूरा ध्यान दो, आराम से तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा.
50% मार्क्स अश्योर्ड है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हाई वेटेज हाई टाइम टेकिंग पे। नेक्स्ट स्लाइड में सॉरी लो वेटेज एंड लो लेस टाइम टेकिंग। इसमें लो वेटेज है तो कभी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक काफी लेस टाइम टेकिंग वाला है एंड रिपीटेडली लास्ट 2-3 इयर्स देखा जाए तो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसको एक्चुअली फर्स्ट स्लाइड में रखना है मैथमेटिकल लॉजिक। इसके ऊपर क्वेश्चंस रीजनिंग वाला चैप्टर आराम से कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स छोड़ दो, सेट्स एंड रिलेशंस बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस कर लो। Differentiation, because it is applicable, it's useful in other chapters also, do it. Trigonometric equations भी कम से कम टाइम में खत्म कर लो, निपटा दो इसको, ठीक है। एंड सिमिलरली नेक्स्ट हाई वेटेज एंड हाई टाइम टेकिंग वाले आ जाएंगे। अगर इसके बाद टाइम बचता है देन फोकस ऑन दीस चैप्टर्स, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में भी इफ यू जस्ट लुक एट मोस्ट ऑफ द पेपर्स, पीवाईक्यू इज योर बाइबल, कुरान एंड गीता। फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही ध्यान दो एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करो। मैट्रिसेस में अगर देखा जाए तो 3 लीनियर इक्वेशंस देखे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, इसलिए ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एंड एडजॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आराम से उतना पार्ट निपटा दो, बाकी डिटरमिनेंट पे टाइम वेस्ट करोगे ना तो टाइम वेस्ट ही हो जाएगा, उसको छूना भी नहीं, ठीक है। फंक्शंस पे भी बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन एग्जॉस्टिव कोई भी किताब उठाओगे ना तो आप कई सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी कई सारे क्वेश्चन दिखेंगे। जेई एडवांस के लिए दिस आर ऑल एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर्ड, बट एडवांस मेन के लिए देखा जाए तो छोटा सा क्वेश्चन लिमिट से, छोटा सा क्वेश्चन कंटिन्यूटी से पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चंस। सो पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन। ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो इसको एग्जॉस्टिवली करने का। हाई वेटेज मोर टाइम टेकिंग वाला चैप्टर्स जो भी है इसको एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर करने की कोशिश मत करो, कभी भी नहीं होगा। पूरा साल भी करोगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तब भी तुम्हारा प्रिपरेशन एग्जॉस्टिव नहीं। आई कैन स्टिल गिव यू 100 क्वेश्चंस व्हिच यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। अब हमें पीएचडी नहीं करना है उस पे, वी हैव टू फोकस ओनली टिल द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसमें एक ये भी पॉइंट आता है समटाइम्स स्टूडेंट्स दे गेट इमोशनल विद सर्टेन चैप्टर्स, या वो ना कि नहीं ये तो मेरा फेवरेट है, इसमें तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें टीचर्स को भी ब्लेम करना है। इवन इफ आई हैव टू गिव एन इंटरेस्टिंग पेपर, I prefer to give questions from these chapters which students will not be solving. डिस्कस करने में क्लास में मजा आ जाता है। अब ये मजा के लिए we cannot get student affected। तो तुम स्मार्ट बनो, स्टूडेंट्स बच्चे तुम स्मार्ट बनो। टीचर से अच्छा क्वेश्चन पूछोगे ना तो यही चैप्टर से देने वाला है, लेकिन ये कोई काम के नहीं है। एडवांस के टाइम पे देखे जाएंगे। मेन के लिए इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में वो बेसिक ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बेसिक ओमेगा के ऊपर आई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। भयंकर क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। वो करने की जरूरत नहीं है। तो डोंट थिंक ऑफ एग्जॉस्टिवली प्रिपेयरिंग दिस चैप्टर्स। सिमिलरली फिजिक्स में भी रोटेशन में जाके अटक जाते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाके अटक जाते हैं। नहीं करना है पीएचडी हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वहां तक निपटा दो। पीवाईक्यूज निपटा दो बहुत, ठीक है। लाइकवाइज सिमिलरली आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू इन द चैट बॉक्स। You will have coverage of your physics and coverage of your chemistry also. Smartly prepared, ठीक है। Smartness is more important, most important. If anything is as important as your hard work, it is smart work. And ये दोनों का combination है ना, ये 1+1 level बना जाता है। बिल्कुल, You will win. बिल्कुल that is very important. You have to make a smart choice, and you don't have to score 100% in JEE Mains. That is the key. Absolutely not, and you need not cover 100% syllabus also. Syllabus as well. तो smartly उतना ही prepare करो जितना तुम्हें prepare करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। And that is, and sir has given you the key as well. What are the chapters, you have to do, what are the chapters that you can blatantly leave. I'll share this PDF with you, focus on that, and PYQs is your Bible, Quran, Gita. जो रिलीजन को नहीं मानता, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, तो उसी को स्टिक कर। ओके, बिल्कुल।
Definitely, sir. I think very important point that we have covered. So we move on to the next question now. I think JEE Mains ke I think neat everywhere. This question is that how do I manage time uh, in JEE Mains? So I mean, I think preparation wise as well, and what the question also saying is during the exam, how can we strategize our time there? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बच्चे मैथ से सिंपल है, 3 घंटे का ही एग्जाम होता है, 180 मिनट्स फॉर एवरीबडी। उसमें मैनेज करने का कुछ नहीं है, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं मिलेगा, 1 मिनट भी कम नहीं मिलेगा। जो भी करना है 180 मिनट में करना है, सिंपल सी बात है। अब मैनेज क्या करेंगे? वी कैन ओनली बी प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव। वी कैन नॉट वेस्ट टाइम। वेस्ट कहाँ पे होता है ये देख लो। नीट में तो ज्यादा वेस्ट होने के चांसेस नहीं है, जेई में वेस्ट होने के चांसेस कई सारे हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं तुम्हारे टेस्ट पेपर में जिसका एक ही मकसद है तुम्हारा टाइम वेस्ट करना। दैट इज अ ट्रैप, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। क्वेश्चन एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लो, लगता है ना ये हो जाएगा, तभी उसको शुरू करो, नहीं तो बाद के लिए छोड़ो। So attempt initial first 2 hours of the examination, you should be doing only those questions which you already know. Last hour में ही कुछ नए questions के लिए आना है। First 2 hours only those questions which you already know. Okay, and कुछ ऐसे भी discussions होते हैं कि केमिस्ट्री से शुरू करूं या फिजिक्स से शुरू करूं या मैथ्स से शुरू करूं, फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इससे शुरू करना है उससे शुरू करना है। कई सारे बच्चे मेरे पास टॉप किए जिनके पैटर्न्स अलग अलग थे। राइट, एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 3 hours is your what confidence levels, your positive attitude. That is the only thing which matters. अब जाओ एग्जाम में कि तुम्हें फोड़ना ही है, कहीं से भी शुरू करो ना, फोड़ के ही आओ। एग्जैक्टली, सिंपल रूल इज जिससे तुम कॉन्फिडेंट हो उससे स्टार्ट करो। ठीक है, अगर वो पेपर टफ आ गया तो फिर क्या करो? जाओ, छोड़ दो, उससे उतना प्यार मोहब्बत मत पालो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज इजी। सो जस्ट स्कैन थ्रू द पेपर, बी स्मार्ट इनफ टू लीव ऑल दोस अननेसेसरी स्टफ। छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं जेईई मेन में, नीट में तो कई सारे मिल जाते हैं, जेईई में भी लगभग 40% of the paper will be easy even in the toughest of the papers. So pick those easy questions and ignore those difficult ones. So दिमाग में घुसने भी मत दो, छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो, flag it and come back to it once you are done with all your easy set of questions. ठीक है, that should be the thing. You should not waste your time sticking to any one question. And कई सारे अच्छे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है, कुछ चैलेंज ले लेता है, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं क्यों हो रहा है, मैं इसको करके दिखाऊंगा, 3-4 मिनट और वेस्ट कर देता है। टाइम, ये चैलेंज लेने वाले टाइम नहीं है। बाद में आने के बाद एग्जाम के 3 घंटे बाद फिर चैलेंज ले लो। एग्जाम में स्मार्टनेस का ही रोल है, नथिंग एल्स। यू हैव टू बी स्मार्ट एंड योर स्कोर हैज टू बी हाई। जो स्कोर बढ़िया तुम्हें देगे ना, वही क्वेश्चन तुम्हारे लिए भगवान है। पिक दोस इजी छोटे छोटे क्वेश्चन एंड डू इट, बी स्मार्ट। वहां पे बहुत सारे करेज दिखा के चैलेंज लेके वो वाला एग्जामिनेशन नहीं है, वो ओलंपियाड्स होता है, वो उसके लिए हम बात नहीं कर रहे। जेईई मेन इज सिंपल स्मार्ट एग्जामिनेशन वेयर यू विल नॉट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ दोस टफ क्वेश्चंस। Nobody is going to ask you बाद में कि वो वाला क्वेश्चन कर लिया था या नहीं। कौन सा किया, कोई नहीं पूछने वाला। कितना किया वही पूछने वाले हैं, कितने सही किए वही पूछने वाला है, एंड उसी के बेसिस पे तुम्हें सीखना। Very important there. And sir, I think mock tests again, are very important here, that जैसे बच्चे अपनी strategy थोड़ा सा, they can strategize, different strategies in mock tests and then finalize the strategy या whatever, they think they can do in the. It doesn't work, man. See, these are all suspense examinations. So mostly थोड़ा pattern last 2 years में ये देखा जा रहा है कि maths papers are coming tough. Right. But I will be a fool if I generalize this and say this year also that is going to be the trend. अब 8th 9th 10th के पेपर्स काफी आसान आ गए, 11th का पेपर कैसे आएगा? Nobody in the world can tell, no guess. सुबह का पेपर टफ हो सकता है, दोपहर का पेपर
आसान हो सकता है। एक में फिजिक्स आसान होगा, दूसरे में केमिस्ट्री आसान होगा। एक में फिजिक्स टफ होगा, दूसरे में केमिस्ट्री टफ होगा। इट इज ओनली देन एंड देयर यू क्रिएट योर स्ट्रेटजी। सिंपल पैरेलल आई विल ड्रॉ टू क्रिकेट। तो क्रिकेट में टॉस से पहले कोई नहीं बता सकता कि कितना स्कोर आज मारना है। पिच देख के ही, थोड़े ओवर्स खेलने के बाद ही पिच को अंदाजा लगा के देन दिमाग में स्कोर सेट करते हैं। ये भी सेम चीज है। कुछ बच्चे पूछते हैं, सर नेटिव वारंगल के लिए कितना नंबर लेके आना है? जितना ला सकते हो लाओ। पेपर आसान है तो 220 पे भी नेटिव वारंगल कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। पेपर टफ है तो 170 में भी मिल सकता है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इंडिया जीतने के लिए कितना स्कोर मारना चाहिए। देयर इज नो आंसर। नोबडी इन द वर्ल्ड कैन आंसर। नो हर्षा बोले, नो रवि शास्त्री, नो सचिन तेंदुलकर, नॉट इवन डॉन ब्रॉडमैन कैन come down and answer this question. So same thing applies to your examination. If it is easy, your aim should be to be more accurate and score high. Speed and accuracy will matter when the papers are easy. ये मंत्रा पकड़ के जाओ। पेपर अगर आसान लग रहा है तो खुश होने की ज्यादा बात नहीं है। Everybody will be scoring, so you have to be more effective in terms of being more accurate and do it in quicker pace. Accuracy and speed are the mantras when the papers are easy. When the papers are tough, choice is the most important thing. Choose right questions and be accurate. Choose right questions and be accurate. When papers are easy, silly mistake का कोई चांस नहीं है ही कम क्वेश्चन जो तुम कर पाते हो। अब उसमें से गलती कर बैठोगे तो कोई उसके लिए कोई भी सजा दो कमी पड़ेगा। Okay, so that time you have to choose questions wisely and do them carefully. Very important. So speed, accuracy, and choosing the right questions is the key here. I'm just repeating. Speed, accuracy when the papers are easy. Yeah. Choice and accuracy when the papers are tough. Tough. Isko गांठ मार लो so that you remember it, when you're giving your exam. Right. Thank you, sir. So we move on to the next question now. So how do I improve question solving time management in JEE? I think so we have question solving time management in JEE. इसको एक ही चीज कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मेरा स्पीड कम है, स्पीड कैसे बढ़ाऊं? बच्चों स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, इसके लिए मैं 100 दवाई नहीं देता। प्रैक्टिस एंड बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जब नहीं रहोगे ना तो ये करना है क्या, वो करना है क्या, ये क्वेश्चन इसके हो सकता है क्या, उसका हो सकता है क्या, सोचते सोचते ही टाइम निकल जाएगा। एंड एट एवरी स्टेप यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट, सो यू विल बी रिविजिटिंग द स्टेप्स वंस फॉर बैक एंड फोर्थ, ये चलता ही रहेगा। ये बल्ला स्मूथ से मारने के लिए ना एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस एज मच एंड छोटे छोटे स्टेप्स पे प्रैक्टिस करते रहो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना प्रैक्टिस करते रहो, सिंप्लीफिकेशंस प्रैक्टिस करते रहो। दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन देख के खुश हो जाते हैं कि मैं समझ लिया। कम नहीं, यू हैव टू पुट इट ऑन पेन एंड पेपर एंड प्रैक्टिस से ही स्पीड आएगा। जो कहते हैं हाथ से नहीं निकाला जब तक तो तब तक नहीं आया। Exactly, and confidence also comes from practice. So जितनी practice होगी उतने कोई भी स्किल ले लो, प्रैक्टिस से ही हाथ साफ होते हैं, प्रैक्टिस से ही स्पीड आ जाता है। गन्ने का जूस निकालने वाले को देखो, संतरे का जूस निकालने वाले को देखो, वो इतना तेज निकालता है, जूसर का कमाल नहीं है, वो ऑर्डिनरी जूसर ही है। हम सोचते हैं कि ये कौन सा कमर्शियल जूसर लेकर निकाल रहा होगा, लेकिन वो बात नहीं है, वो हर रोज निकाल रहा है तो इससे तेजी से काम हो रहा है। तो हमारा भी वही चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड ऑटोमेटिकली। स्पीड के लिए और कोई मंत्र नहीं। Exactly, and then the way they say, कि वो की silly mistakes हो रही हैं, वो भी इसीलिए होती है because you've not enough practice. You have not practiced enough. You are not confident in the formulas. So practice, and more practice, and then that should be the mantra. Revise and practice. Next till the examination date, दो ही चीज करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। इसको you make it a mantra, right? जैसे अभी सर you make it your mantra and repeat it every day with you. You have to do. लिख लो, तुम्हारा आईने के ऊपर लिख लो। आगे देखो, घर में आईना तो देखते रहते हैं हर रोज, तो लिख लो। Yes. Very important there. So if you are in 11th mid, then what would be your strategy and time management for JEE 2024? So if we have, students who are in 11th right now and they have a year
with them. So and 11th में सर बच्चे तो ऐसे 11th मिड वाले बच्चे जो भी है, अब तक जो भी बोला सब भूल जाओ, वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तुम्हें सारे चैप्टर ढंग से करना है, शिद्दत से करना है, कोई चॉइस भी नहीं छोड़ना है। सी 11th में इनिशियली at this stage especially it is a skill building, no more than knowledge building exercise, it's a skill building exercise for you. So you have to have that nuances of skills. ये कुछ अच्छे चैप्टर सॉल्व करने से ही मिलता है, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस ऑफ सीरीज हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का इनिशियल पार्ट हो गया। इससे ही तुम्हारे सब्जेक्ट लेवल पे स्किल्स ट्यून होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में जीरो से हो गया। सो तुम्हें वेटेज वगैरह नहीं देखना है, अभी एग्जामिनेशन फोकस पे नहीं प्रिपेयर करना है। यू हैव टू फोकस प्योरली ऑन योर स्किल्स, होनिंग योर स्किल्स। तुम्हारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल अक्यूमेन, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, हाउ कैन यू होन इट वेल? Your understanding of physics, your visualization skills in physics, how will you hone that well? Chemistry के लिए what should be your learning strategies, how well you are able to learn and how well you are able to retain things, and how well you are able to apply from one situation to another situation, how well you are able to take those exceptions right, is what matters to you. So subject अभी matter नहीं करता, वो नेक्स्ट ईयर बात करें कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब बाद में बात करेंगे। नाउ यू फोकस ऑन होनिंग योर स्किल्स, एटलीस्ट टिल द अर्ली पार्ट ऑफ योर 12th क्लास योर फोकस शुड प्योरली ऑन होनिंग योर स्किल्स। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी बढ़ना चाहिए, तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए। ऑल ऑफ दिस एंड डोंट, ऐसा ना हो कि भी सुन के पहले कि है ना अब एंड में हम एंड के 6 मंथ्स में पढ़ लेंगे तो भी मत पढ़े। सो यू नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दैट इज व्हाट सर इज ट्राइंग टू फोकस ऑन, दैट दोस 6 मंथ्स में पढ़ना जो है ये कर चुके हैं आप लोग, शुरुआत में भी करे होंगे कुछ लोग, जो लास्ट में पढ़ते हैं ना ये पास होने के लिए, रैंक के लिए नहीं, टॉपर के लिए, टॉपर के लिए जो पढ़ रहे हैं ना काफी शुरू से पढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम, क्योंकि अब से प्रिपेयर करोगे ना यू विल बी रिलैक्स्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी जो टाइप कर रहे होते हैं ना सर 6 मंथ्स में हो जाएगा क्या, 4 मंथ्स में हो जाएगा क्या, वो भाइयों से बहनों से बात कर लो एक बार, कितना टेंशन में हो, उतना टेंशन तुम्हें नहीं झेलना है। तो अभी से ये प्रिपरेशन कर लो, आराम से हो जाएगा, एंड शिद्दत से करो तो अच्छे रैंक मिलेंगे। इम्पोर्टेंट हियर, वेरी गुड। So should there be specific exam strategy? I think that's what I asked you that time, to attempt the exam. Specific examination strategy, I told you, I will not get into the subject wise strategy की एक टाइम मैनेजमेंट का एक ballpark दे देता हूँ which is usually followed. Chemistry should not be more than 40 minutes. So ensure that chemistry is typically in 40 to 45 minutes range. ठीक है, this is a rough ballpark, ये नहीं कि 45 मिनट्स करना ही करना है या उससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लेना है, ऐसे नहीं। रफ ballpark is 40 to 45 minutes. Mathematics you can never, nobody can ever complete it in 60 minutes, so उसके लिए 75 minutes लगा दो। 75 minutes should be given to mathematics and 60 to 65 minutes should be given to physics, ठीक है। These are rough ballparks. अब ये फिर से डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना है। फिजिक्स अगर ज्यादा अच्छा था तो मैथ्स से 10 मिनट लेके फिजिक्स को दे दो। अगर फिजिक्स पेपर आसान है, मैथ्स पेपर टफ है, तो मैथ्स में से थोड़ा टफ पेपर करने की कोई जरूरी नहीं है। कम टाइम टफ स्पेंड करो, आसान चीजों में ज्यादा टाइम स्पेंड करो, which will come to know only during the examination. So this is something which you have to build during the examination. इन मॉक टेस्ट में ध्यान दो, ये आदत डालने की कि एग्जाम के बीच में तुम्हारा स्ट्रेटजी डिसाइड करो। एक बार पेपर पूरा देखने के बाद तुम अपना स्ट्रेटजी डिसाइड करोगे, 1 घंटे के पेपर के बाद तुम अपना स्ट्रेटजी डिसाइड करोगे। तो ये शुरुआत में ही अगर माइंड बिठा के जाएंगे ना, वहां पे जाके गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एग्जाम विल ऑलवेज थ्रो सरप्राइजेस टू यू। यस, गूगलीज एंड कभी भी बॉल फेंकने से पहले तुम्हें शॉट नहीं डिसाइड करना है। बॉल देखने के बाद ही, टप्पा मारने के बाद ही तुम्हें सोचना है कि
वो 2 सेकंड में कि क्या मारना है, कवर ड्राइव है कि स्ट्रेट ड्राइव है कि ऊपर करना है नीचे करना। तब तक फील्ड सब देख के संभाल के रखो कि ये आ गया तो ये आ गया, ये आ गया तो ये करना, ये ध्यान में रखो, बट डोंट गो विथ ए फुल फ्लैश पेपर पे लिख के कि मैं ये ही करूंगा, इसके आगे कुछ नहीं करूंगा, वैसे मत सोचो, ये गड़बड़ा जाता है। यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू स्ट्रेटेजाइज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एंड वहीं पे स्मार्ट पीपल विल। ओके, तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, अपना प्लान्स रेडी करके जाओ कि ये हो गया तो ये कर दूंगा, पेपर टफ है तो ऐसे करूंगा, पेपर आसान है तो ये करूंगा, मैथ्स का टफ है, केमिस्ट्री का आसान है तो ये करूंगा, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट टफ है, जो वीक सब्जेक्ट आसान है तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आसान है, वीक सब्जेक्ट टफ है तो खुशी की बात है, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो हैव सम सच प्लान्स and implement them during your mock test. At least from now, you should be giving a close to around 25 mock test at least. Weekly 2 mock test दे दो ये पीरियड में, बहुत है, ज़्यादा भी टाइम स्पेंड मत करो। 2 mock tests a week are sufficient at this stage of your preparation. Go ahead with that and apply the strategy, and paper to paper, keep seeing what you have to change. Right. For which type of paper? It is always dependent on type of paper. Yes. So don't fixate yourself towards a specific strategy because Exactly. ऐसा है And कोई भी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ोगे ना, हम्म, तो उसको ऐसे हमेशा एग्जाम में एक मोमेंट आया ही होगा, टॉपर को भी आया होगा, जहां पे उसको पसीना छूट रहा, then he will try to re-strategize according to the paper and would have come AR number 1, number 2, AR 1 to 10, वो फैंसी वाला रैंक, ठीक है। तो उसको भी 1 मिनट एग्जाम में पसीना छूटा ही होगा, ये होता ही है, एंड ही विल हैव टू ट्वीक हिज स्ट्रैटेजी। सो रिजिड स्ट्रैटेजी से कभी भी मत जाओ, यू शुड बी रेडी टू ट्वीक इट वेल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करके नहीं चला, कभी भी 2 चीजें याद रखना है एग्जाम के बीच में, कॉम्प्लेसेंट भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं करना है। वेरी पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, देयर इज ऑलवेज रिलेटिव मार्किंग व्हिच मैटर्स। पेपर आसान है तो बाकी लोग सो नहीं रहे हैं, उनके लिए भी आसान। सो पेपर आसान है तो भी तुम्हें अलर्ट ही रहना होगा, पेपर टफ है उसमें भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगा। very important. So I think again, I think that this session is, there's so much learning for me as well, and for all the other mentors as well. If they write down all these points, they can guide the students so well. So that is, so one thing again, students, you have to be in constant touch with your personalized mentor, your coach. Jo sir Casey said the points that he's telling here, you can discuss with him or her again and again, and he or she can guide you, well towards the journey. So we'll quickly move to the next question. So how to balance the time between 3 subjects? I think I'll give you a rough ballpark again. So 11th के भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो 11th students should focus more on maths, physics and less on chemistry. So typical bifurcation can be around 40 to maths, 30 to physics and chemistry, or 35 to maths, 35 to physics and 30 to chemistry for 11th kids. For 12th kids, chemistry में रिवाइज करने के लिए काफी ज्यादा होता है, तो 40% of the time should go for chemistry and remaining you distribute between your physics and mathematics. 40% of your time at this stage should go for your chemistry and remaining time you balance between maths and chemistry. This should be the ideal ballpark. एंड कोई भी अगर चैप्टर टफ लगता है तुम्हें, तो या तो डिसाइड कर लो कि छोड़ दोगे या करोगे। छोड़ दोगे तो उसको छूना भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता। कई सारे बच्चे ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं कि मेरा रोटेशन नहीं हुआ, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब ठीक से कर लो, तब भी तुम्हें अच्छा खासा रैंक आ जाए। 3-4 सब्जेक्ट टॉपिक से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। So you can happily score wonderful ranks still with the remaining 77 chapters. Or even if you are thorough with 80% of the chapters, more than sufficient, you will still get a good seat securing. yes, very important. So again, we've been talking about that 100% syllabus भी cover करने की जरूरत नहीं है, जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी
चैप्टर पे 100% करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चैप्टर को उतना ही करो जितना एग्जाम में पूछे जा रहा है। उसके लिए पीवाईक्यूज को ही मंत्रा मार लो, मैं क्या बोलता हूँ, वो क्या बोलता है, सर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पीवाईक्यू है तुम्हारा लाइब्रेरी तक होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो तो पूरा कच्चा चिट्ठा उसका सामने आ रहा है। बिल्कुल, nothing out of that comes, so what we have seen also, Exactly. repeated questions on the same concepts are repeated, so agar aapko wo concepts clear hai to you're mostly there, right? Very important there again. So I think these are Yeah, so I'll be sharing this sheet with you, all of you. Physics and every chemistry also, of ballpark experimentation is given. तो तुम्हारा preparation and ये सब दिमाग में रखते हुए you can prepare accordingly. This PDF will be shared. Okay. Any more doubts, kids? We'll be sharing. Sorry, see your voice, bro. Yeah. So there are, few questions that, there are a lot of questions that students have been asking. So as students have been asking, such how much weightage should be given to part tests at this stage and, to full tests. So part test attempt करें या सिर्फ अभी full test attempt करना शुरू करें? Part test attempt करें या full test attempt करें? Full test के लिए अभी time नहीं है, because most of you are not still thorough with the entire syllabus. Okay, so full test तभी start करना है जब you are at least comfortable or thorough with 60% of your syllabus. तब तक full test करना नहीं है. So whatever chapters you are revising now, उसका एक group बना लो, and a plan might be shared with you from your organization. myclassroom has 8 years there. 30th से 8 years शुरू हुआ है हमारा, तो 8 years का according तुम्हारा revision plan कर लो and give those part tests. Don't venture into doing full test now, confidence shatter हो जाएगा. Full test तभी करना है जब तुम्हारा 70% 60% syllabus खत्म हो गया हो. Right. Otherwise एक और काम भी करते हैं, गलत है जो बोलते हैं 50% मेरा 11th का पूरा सिलेबस हो गया, 12th का नहीं हुआ, तो 3 hours का एक टेस्ट ले लेते हैं, उसमें से 11th के ही क्वेश्चंस करते हुए बैठते हैं एंड सोच लेते हैं कि मेरा 50% मार्क आ गया तो मैं अच्छा खासा प्रिपेयर हो गया. नो, वो टाइम तुम्हें डबल द टाइम में कर रहे हो. 50% ऑफ द क्वेश्चंस यू आर डूइंग इट इन 3 hours, whereas in actual practice paper you should have all done it in 1.5 hour or max 2 hours. तो ये गलत इंडेक्स देगा, इट विल नॉट गिव यू राइट फीडबैक. सो स्टिक टू योर टेस्ट शेड्यूल एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली. तुम्हारे रिवीजन के अकॉर्डिंग पेपर जनरेट करना मुश्किल होगा, तो जो भी टेस्ट सीरीज तुम फॉलो कर रहे हो, if it is my classroom, wonderful, revise your schedule according to all your test series. Your revision schedule should go along with that. Right. So, and so another question that many students have asked is how to balance boards and JEE preparation, and how to boards and JEE preparation. I already told you not to say equally on both the boards. ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट होना होगा. If your marks are less than 140 in mock test, then give some sufficient time for boards. If your marks are more than 140, your already some part of your JEE would have taken care of boards. जो additional topics होते हैं ना, तुम्हारा मे बी बायो नहीं पढ़ रहे हो तुम JEE के लिए, या कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहे हो, उस पर ज्यादा फोकस करो. बाकी प्रिपरेशन तुम बोर्ड्स के टाइम पे भी कर सकते हो, बिकॉज especially CBSE you have a lot of time there during the examination, so that will be more than sufficient. And chemistry के लिए तुम्हारा बोर्ड का प्रिपरेशन हो या JEE का प्रिपरेशन हो, लगभग एक ही है. तो NCERT is your bible. Once you do NCERT, immediately उसी के बाद PYQs उस चैप्टर के सॉल्व कर लो. तो साथों साथ बोर्ड्स एंड your JEE is also over. मैथ्स के लिए भी your NCERT textbook is useful, not sufficient. Okay, तो मैथ्स का बोर्ड्स करने के बाद थ्योरी फॉर्मूला सारे आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे उसमें. उसके बाद एडिशनल जो भी फॉर्मूलास या नोट्स दिया हुआ है तुम्हारे पास, वो कर लो. दैट विल डू. एंड सो PYQ mean for how many years they should be following it? For 10 years, 20 years? So that also students have asked. PYQ लास्ट अगर करना है पूरा तो मुश्किल ही है अभी कंप्लीट करना. Even if you do last 5 years, that will suffice. क्योंकि last 5 years में इतना सारे multiple attempts के कारण इतने papers बने हुए हैं, so that will give you right index. And 2004, 2005 ये सब में trends अलग थे, अभी का trends अलग है. Especially last 3-4 years the trends are different.
and that will give you clear indicative of how your preparation should be. तो 2004 वो सब छोड़ दो अभी, 2015 से शुरू करो या 2018 से शुरू करो, whatever it is, but you have to complete thoroughly. So from 18 to 22 is also sufficient, or 15 to 22, wonderful if you can do that, because JEE में questions repeat भी होते हैं, and उसके बावजूद अगर time है तो JEE advanced के single option questions सारे solve करो, ठीक है? For those toppers who are looking at scores more than 220 and dot, so after completing your JEE main archives, JEE advanced के archives के भी single option correct questions वो सारे देख. So there's one question that somebody has asked, probably, though the topics were on JEE mains, but if someone has to strategize their preparation for JEE advanced, they're well confident about JEE mains. So, what should they do at this stage? JEE advanced and JEE main में there is only one difference. Syllabus is the same, more or less the same, 99% the same. Level of complexity of the questions is very different. Very different. तो solution वहाँ पे है. So you have to solve tougher questions for JEE advanced. उसके लिए JEE advanced के PYQs लगा दो, ठीक है? JEE advanced के लिए PYQs, JEE advanced PYQs will give you clear indicative, but remember these things you have to solve. Try solving on your own. एक एक क्वेश्चन के पीछे 15-20 मिनट आधा घंटा भी लगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, but your thinking process will refine. तो immediately solution देख के solve करना, that strategy will not work for JEE advanced. You should develop that appetite for doing unknown new questions there. ठीक है? कितने भी मॉडल रट लो, वहां पे नया ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, especially in mathematics. Okay? And also in physics. Physics में थोड़ा बहुत आजकल कम हो गया, लेकिन मैथ्स में इंटैक्ट आज भी wonderful questions पूछे जाते हैं. So you have to have that acumen of solving new questions, and वो तभी आएगा जब तुम न्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. तो डोंट लुक एट सॉल्यूशंस, स्ट्रगल विद एवरी क्वेश्चन, हाफ एन आवर डजंट मैटर, कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट, मे बी वन क्वेश्चन a day, if you solve on your own, even by taking half an hour, that should not matter. So have a habit of solving questions on your own, and for you again, advanced previous year questions should be a binding, but don't look into their solutions, do them on your own. Very important, right? So solutions, because we've also seen students जो they look at solutions and think आ गया है, but then आ गया है, नहीं होता ऐसे. साइकिल किसी को चलाते हुए देख रहे हो, सालों से देख रहे हो, तुम थोड़ी ना चला पाओगे. Very true. So you have to sit on the bicycle, fall once or twice, फिर बैलेंस आ जाता है कि अच्छा इस तरफ ज्यादा वेट लगा तो यहाँ गिर रहा हो, then you will be able to balance. So problem solving skill, any skill can only be learned by doing yourself. ये वीडियो देखने से, YouTube देखने से नहीं होता, टीचर को सॉल्व करते हुए देखने से तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे. You have to solve on your own. On your own. We're already crossed 8 p.m, but I think this is the last question, though we have 70, we had 70 plus questions there, though most of them have been covered, but if still students, if there'll be any questions that are left unanswered, we'll have them answer in the chats or on our channel everywhere. You can just follow us. And so I think the last question, sir, that I think that is pertaining to everybody who's preparing, that how to build a self discipline for studying. That a student is asked, probably. A lot of students, they feel that they're not able to discipline their preparation, they waste a lot of time here and there. So anything that you can tell to help them, how they can build that self discipline, or is there anything, any one thing that they need to take care of? See, self discipline ये नहीं है कि we will not always be, there are no two category of people who are disciplined and who are not disciplined. ऐसा कभी नहीं होता. Same person in one event can be disciplined and in another event can be ill-disciplined. अब तुम देखो तुम कहाँ पे डिसिप्लिन शो कर रहे हो. कुछ बच्चे होते हैं मैच शुरू करने से पहले ही, कल मैच चल रहा है तो आज से ही पॉपकॉर्न वगैरह प्लानिंग चालू हो जाता है, ठीक है, बिकॉज यू आर गिविंग हाई प्रायोरिटी टू दैट सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच और व्हाटएवर मैच. एंड कुछ बच्चे होते हैं रिश्तेदार के घर जाना है तो पूरा तैयारी सब कुछ 2-3 दिन से प्लानिंग चल रहा है.
Now, what is your priority? तुम्हारा ड्रीम कॉलेज जो है उसमें जाना तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन उसमें आ जाता है। जैसे कई सारे बच्चों को देखते हैं, घर जाना होता है कॉलेज से, टिकट नहीं मिलता, बस के ऊपर चढ़ के भी जाते हैं, वापस आना होता है ना तो स्लीपर का ही मिला, थर्ड एसी का नहीं मिला, थर्ड एसी का मिला, सेकंड एसी का नहीं मिला, मिला लेकिन कोने वाला सीट नहीं मिला। जो चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है, जो चीज तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तुम्हारा डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। So state your priorities, rethink whether how important JEE is to you. एक बार देखो, सोचो, JEE में क्रैक करके तुम्हारा ड्रीम कॉलेज में जाने से तुम्हें क्या मिलता है? अगर वो मिस कर जाते हो ना तो उससे क्या खोते हो? कितने साल के लिए खोते हो? Telling yourself as an IITian and NITian for almost next 40 years from now, every now and then, how beautiful life makes. तुम्हारा कोहॉर्ट कैसे होगा, पीयर ग्रुप कैसे होगा, अपॉर्चुनिटीज कैसे होंगी, what wonderful facilities you have, and what kind of pride your parents will take, what kind of pride you will take for yourself. दोस्तों तुम्हें किस नजरिए से देखते हैं वो ऑटोमेटिकली वो बदल जाता है, वो ऊंचा हो जाता है, सबके दिमाग में तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये एक बार सोच लो, ऑटोमेटिकली जो करना है ना वो कर लो। यस, exactly, you have to live that dream, you have to think about it कि जब आप वहां बस कुछ नहीं मानना है, कोई मंत्र नहीं है, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज का एक बार पिक्चर देख लो, फोटो पे नहीं, इधर इधर जो बिठाते हैं ना वो ऑटोमेटिकली रियलिटी में आ जाता है। Any affirmation which you put in your brain, everything is conceived twice in the world. Everything दो बार पैदा होता है, एक बार दिमाग में पैदा होता है, दूसरी बार रियलिटी। दिमाग में जो रोज जन्म नहीं ले रहा है वो रियलिटी में कभी, तो हर रोज सुबह उठते उठते ही एक बार तुम्हारा ड्रीम कॉलेज का पिक्चर देखो, वहां पे समोसा खा रहे हो देखो, वहां पे चाट खा रहे हो देखो, वहां पे प्रोफेसर से गाली खा रहे हो देखो, ये सब देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है ना सच होती। उसके लिए जो करना है ना तुम कर दो। 12 बजे जागना है, 10 बजे जागना है, 4 घंटे सोना है, 3 घंटे सोना है, 12 घंटे सो के भी निकालना है, तुम कर दोगे। Whatever you have to do, you will do. You know it, how to do it. Yes, very true. Nobody will have to force you, or nobody will have to tell you that you have to do it. तुम्हें जरूरत है, तुम ही बोलोगे लोगों को। Okay, so all the very best, children. I know you will all be successful and wonderful day. Have a wonderful day, and we're all there with you through this journey. Any doubts you can ping us. Any doubts you can post us. We're all there with you. Happy journey and happy learning, and come out successful. All the best. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for joining us today and guiding the students for this. I think the treasure of strategies, the treasure of things that you've shared today. And बहुत सारे students जो अभी थोड़ा सा bog down हो रहे होंगे, they would be feeling so much confident, and they have so much to ponder over and see कि अब कैसे, how can they strategize their preparation in this last leg. So thank you so much for sharing your knowledge with us and guiding the students. And students will be sharing the PDF in the chat, so you can take it from there. And if you have any queries, feel free to connect with us on any of the social media platforms. On our YouTube channel, you can leave a query there, and we'll try our best to get back to you. We might be late, but we'll definitely answer your queries. So all the very best. Have a good evening, have a good Sunday, enjoy your day, take out some time for your passion, and always look to achieve that dream that you've been living for all these years. Now is the time to work towards it, and sir has given you enough metal and enough knowledge so that you can reach that dream easily. So believe and be confident. Thank you, confidence. Thank you so much. Thank you, sir. Again, good night, everyone, and enjoy your day. And I'll just share the PDF with all of you in the chat box so that you can. Yes. Oh. All right. I think it's available in the chat now. You can take it from there. So thank you everyone for joining, and thank you, sir. Thank you. All right.
All the best. Bye.